This video is about the extraction of iron and which take place in the blast furnace. And in the previous video, we have learned about the extraction of aluminum. And in that video, I told you about that the extraction of a metal is actually a reduction process, right? That reduction can be done either by the strong redox process, which is electrolysis. It can be done by electrolysis, or it can be done by reducing agents. And the reducing agents can be your carbon monoxide, hydrogen, or ammonia. Or it can be the substance can be reduced when you heat it thermally. They can be thermally reduced. Now, which process will be employed for an extraction its position depends on its position in the reactivity series. So extraction of metal depends on its position in the reactivity series. Now let's see where the iron stands and what will be the method employed for its extraction. Okay. Aluminium, in the last video, we have seen that it can be extracted by the process of electrolysis. Let's see how the iron will be extracted. Now, if we see the reactivity series, then iron, the first few metals which are very reactive, they are being extracted by the process of electrolysis. In that category comes the potassium, sodium, calcium, magnesium, and aluminum. Aluminum is the case study which we have studied in the previous video. Now we have to look for iron. Now the second category, which are mildly reactive metal like zinc, iron, tin, lead, and copper. So our next case study is basically iron according to our syllabus. Now that these are categorized as a mild reactive metals, and the mild reactive metals, we extract them by heating their oxides or their compounds with the reducing agent, that's carbon, or by a carbon monoxide, which is another reducing agent, or by hydrogen and ammonia. So we'll see that this time the extraction of iron will be done by using a reducing agent, which can be carbon monoxide. Hydrogen and ammonia we actually use in the lab as a reducing agent. So for the bulk extraction, we will be using only carbon and carbon monoxide. Okay, let's proceed with that. First thing, before extracting the metal, we have to decide, or we have to choose an ore. The ore is a source from which the metal will be extracted. So the ore of iron can be hematite, it can be magnetite, or it can be iron pyrite. Now, depending on which of the ore is giving you the highest percentage, of metal, and from which the metal can be easily extracted. These are some of the pointers which we have to keep in mind. Or the one, we will choosing the ore which has the least impurities, from which the impurities can be easily removed. So on the basis of this criteria, we will be extracting iron from the hematite ore. The formula for hematite is Fe2O3. Now the hematite ore will be giving you the greatest percentage of the metal on extraction, and it has the least impurities which can be easily removed, and those impurities are सिलिकॉन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो आपके हेमेटाइट और के अंदर जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड की होती हैं, दैट इज बेसिकली सैंड. सही. तो इस ओर को सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी नीड टू रिफाइन दिस ओर, वी नीड टू कॉन्सेंट्रेट दिस ओर. अब जो आपके पास हेमेटाइट ओर है, बिफोर प्रोसेसिंग, बिफोर इट स्टार्ट एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम इट्स ओर द आयरन, व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू कॉन्सेंट्रेट or we need to refine this ore, because we are digging it out from the earth crust. This is an ore, so we need to concentrate, or we need to refine this ore. We need to crush it, wash it. That is the process in order to concentrate and refine the ore, and then we will be further using it for the extraction of the metal iron. Okay, we can see the cross section of the blast furnace here. It's a tall tower
where a temperature of approximately 2000 from 2000 till 200 2000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 200 डिग्री सेल्सियस तक अप्रोक्सीमेटली इसके अंदर टेम्परेचर मेंटेन होता है, राइट? इट्स अ टॉल टावर एंड फ्रॉम द टॉप. Now, before introducing the ore in the blast furnace, we know previously, as I said, कि hematite ore we have selected because that has the impurities which can be removed and it gives the highest percentage of iron ore on extraction. So we have chosen the hematite ore for the extraction of iron, and this ore is already being concentrated. That means we have grinded that ore, we have washed it in order to remove all the possible impurities, because it's drilled out from the earth crust. तो उसके अंदर earthen impurities बहुत होती है जिसको हम concentration से wash करके remove कर देते हैं. Now, this is where the you will be loading, ठीक है, your raw material. And among the raw material में हमारे पास जो चीजें आती हैं जो हमें लोड करनी होती है इस blast furnace में for the process, though that raw material is basically your iron ore, which is your hematite, ठीक है. इसके अलावा हम कोक लोड करते हैं और उसके अलावा हम कैल्शियम कार्बोनेट करते हैं. So these are the three raw materials which are loaded from the top. They're loaded from the top. Now, why do we need the ore? Why do we need the hematite? Because it's a source. It's a source of iron metal. That's why we are taking the hematite as the first raw material. Why are we taking coke? Coke is basically a reducing agent. So the process of extraction will take place because of the reducing agents, reduction done by the reducing agents. For that, we are loading in the along with the hematite the coke, ठीक है. तो एक मिक्सचर फॉर्म हो जाता है. और कैल्शियम कार्बोनेट जो है रॉ मटेरियल क्यों यूज होता है? क्योंकि इसके अंदर होता है ये कि कैल्शियम कार्बोनेट एट अ हाई टेम्परेचर डिकम्पोजेज इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. अब ये जो हेमेटाइट ओर है तो वॉश कर आपने इसको कॉन्सेंट्रेट किया, बट देयर आर चांसेस दैट सम अमाउंट ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड और सैंड still exist in it. तो कैल्शियम ऑक्साइड जो फॉर्म हो रहा है ऑन डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड बीइंग योर बेसिक ऑक्साइड, इसका नेचर क्या है? दिस इज बेसिक in nature, and silicon dioxide is acidic in nature. So what happens, they both combine together and this leads to neutralization reaction, ठीक है. ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बीच में होता है. तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड व्हेन दे रिएक्ट टुगेदर they will be giving you calcium silicate, ठीक है. दिस इज अ बाय प्रोडक्ट विच इज बीइंग फॉर्म. ये आपका एक और बाय प्रोडक्ट है. आपका मेन प्रोडक्ट जो है वो तो आयरन है जिसकी वजह से आप एक्सट्रैक्शन ब्लास्ट फर्नेस में कर रहे हैं, लेकिन साइड बाय साइड यू आर गेटिंग अ सेकेंडरी प्रोडक्ट विच इज बाय प्रोडक्ट, दैट इज कैल्शियम सिलिकेट, जिसको आप जनरली स्लैग भी कहते हैं, ठीक है. तो स्लैग का यूज ये है कि स्लैग आपका प्रोड्यूस तो होता है जब कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड आपस में रिएक्ट करते हैं, और ये स्लैग का जो यूज होता है इट्स यूज फॉर द रोड सर्फेसिंग. रोड्स वगैरह के सर्फेसिंग के लिए आप स्लैग को यूज करते हैं, ठीक है. तो ये बेसिकली आपके दीज आर बेसिकली द रॉ मटेरियल्स एंड विच यू लोड फ्रॉम द टॉप ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है. पहला पार्ट. तो रॉ मटेरियल में हमारे पास क्या क्या जाता है? हेमेटाइट आता है, कोक आता है और कैल्शियम कार्बोनेट. यू शुड बी नोइंग द यूज ऑफ व्हाई आर वी यूजिंग इट, ठीक है. तो आई हैव स्पेसिफाइड द हेमेटाइट इज अ सोर्स ऑफ आयरन, कोक इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, एंड कैल्शियम कार्बोनेट decomposed to give you an as basic oxide, calcium oxide, which combined with the remaining silicon dioxide which has not been removed by just simply washing it. तो ये तीनों रॉ मटेरियल्स के पर्पस होते हैं इनको हम ऊपर से लोड करते हैं, ठीक है. एक तो चीज ये हो गई. दूसरी चीज क्या है कि यहाँ से ऊपर से आपने रॉ मटेरियल लोड किया और नीचे से देयर इज एन ओपनिंग जहां से आप ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. यू आर इंट्रोड्यूसिंग फ्रॉम द बॉटम, यू आर इंट्रोड्यूसिंग फ्रॉम द बॉटम द ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर. इसकी वजह से जो आपका नीचे का टेम्परेचर है वो बहुत हाई हो जाता है. तो दिस इज द वे टू हीट द फर्नेस, ठीक है. इसके अंदर कोई और तरीका नहीं है इसको गर्म करने का, क्योंकि इसका टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस तक रहता है. तो उसको हीट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हॉट एयर होती है उसके ब्लास्ट, उसको बहुत हीटेड एयर को इंट्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम द बॉटम. इसीलिए हमारा बॉटम सबसे ज्यादा हीटेड होता है. जैसे से एयर ऊपर जाती है वैसे वैसे इसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है और ऊपर का टेम्परेचर कम होते होते 200 डिग्री सेल्सियस रह जाता है, ठीक है. तो ये तो आपका ब्लास्ट फर्नेस का क्रॉस सेक्शन है जिसको मैंने अभी आप एक्सप्लेन किया.
अब हम आते हैं एक्चुअल प्रोसेस पर। जब ऊपर से रॉ मटेरियल मैंने क्या कहा था, रॉ मटेरियल में कार्बन एज अ कोक है, उसके अलावा आपके पास रिफाइंड फॉर्म में हेमेटाइट है, इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज भी हो सकती हैं, और उसके अलावा हमने तीसरा रॉ मटेरियल ऊपर से कैल्शियम कार्बोनेट लोड किया। तो पहला रिएक्शन जो होता है, और यहाँ से हमने हॉट एयर इंट्रोड्यूस करी, और एयर में वी हैव 78% नाइट्रोजन, approximately 21% oxygen and the rest are the carbon dioxide and noble gases। ठीक है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है। तो नीचे से हमारा ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर आ रहा है और ऊपर से हमारे पास रॉ मटेरियल आ रहा है। अब सबसे पहले क्या होगा, इस पर्टिकुलर जगह पे जो बिल्कुल शुरू में जो ऊपर से आप लोड कर रहे हैं ना रॉ मटेरियल, over here on the top of the blast furnace, what will happen, the coke, which is basically carbon, coke is going to react with the oxygen which is coming from down। यहाँ से जो ऑक्सीजन आ रही है वो इस फॉलिंग कोक के साथ रिएक्ट करेगी और देगी आपको कार्बन डाइऑक्साइड। एक चीज आप याद रखिए कि ये वाला जो रिएक्शन है, दिस इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। बिकॉज इट इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, सो इट liberates the heat which is going to maintain the temperature of the blast furnace। ठीक है, कोक ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा और जो ऑक्सीजन ऊपर जा रही है और इट्स फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब रिएक्शन हुआ सेकंड, अब कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है, एंड कोक इज अ सॉलिड। Now what happens, the carbon dioxide being gas, it will rise up, carbon dioxide being gas, carbon dioxide यहाँ बनी है, so it is going to rise up, it will be liberated and will come in contact with more of coke। जब carbon dioxide and coke, when they react together, they will be getting the substance which is basically known as carbon monoxide, and the carbon monoxide is also a gas, right? So it will be giving you 2 moles of carbon monoxide. Up now at this stage, the blast furnace has got 2 reducing agent present in it. One is your coke as a reducing agent, and another one is carbon monoxide as a reducing agent. So coke as well as the carbon monoxide, they both are going to act as a reducing agent. Now the examiner sometimes asks that out of these two, which is a better reducing agent? Now coke is a solid and carbon dioxide is a gas. So which the gases we know they can diffuse faster. The substance which can diffuse faster will definitely act in a better way. So carbon monoxide being a gas is going to act as a better reducing agent as compared to carbons in the solid form or in the coke form। तो पहली इक्वेशन जो हुई हुई थी हमारे पास, कोक जो था ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस विच इज गोइंग टू लिबरेट अप, ठीक है, वो ऊपर राइज करेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड विल कम इन कांटेक्ट विद मोर ऑफ कोक, बिकॉज आप कंटिन्यूअसली ऊपर से रॉ मटेरियल जो है वो ड्रॉप कर रहे हैं। Now, carbon dioxide and coke, when they react together, they will be giving you carbon monoxide. This is also a reducing agent. Now, out of these two, coke and carbon monoxide, I have explained you why the carbon monoxide is a preferred oxidizing agent, which is there in surplus. ठीक है, अब तीसरा रिएक्शन क्या हुआ कि ऊपर से सब चीजें नीचे आ रही हैं। अब इसी तरह से आयरन ओर भी ऊपर से नीचे आ रहा है, यू आर ड्रॉपिंग द आयरन ओर हेमेटाइट फ्रॉम द टॉप। ठीक है, अब हेमेटाइट इज इन द सॉलिड स्टेट, now it comes in contact with the carbon monoxide which is a gas, right? So this as a reducing agent, this is acting as a reducing agent। तो ये iron ore को जो है reduce करके it will be forming iron, and along with that it is going to give you carbon dioxide। ठीक है, तो अब आपका रिएक्शन क्या होगा, ये आपका मेन एक्सट्रैक्शन रिएक्शन, दिस इज योर मेन एक्सट्रैक्शन स्टेप, जहां पर आयरन ओर के साथ रिड्यूसिंग एजेंट जो है रिएक्ट करके आपको आयरन मेटल देता है और साथ में देता है कार्बन डाइऑक्साइड। If you balance it, we'll be seeing 3CO, will be giving 2 iron and will be giving you 3 carbon dioxide। So this is the most important reaction, क्योंकि यहाँ पर इस reaction के through आपका extraction हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब हमने पर्पस पढ़ लिया, कार्बन का हमें रीजन पता चल गया, रिड्यूसिंग एजेंट, और वो कार्बन मोनोऑक्साइड को फॉर्म करने में यूज हो रहा है, विच इज इवन द बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। आयरन ओर इज अ रॉ मटेरियल इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट द आयरन। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मैं पहले आपको हिंट दे चुकी हूँ। अब होता यह है कि somewhere here where the temperature is very high, the calcium carbonate which is being dropped from the top, which has been loaded from the top, it on heating, ठीक है, यहाँ पर हाई टेम्परेचर पे डिसइंटीग्रेट और ब्रेक्स डाउन इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कैल्शियम डाइऑक्साइड, वी नो, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, दिस कैल्शियम ऑक्साइड इज बेसिकली
बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर, ठीक है। और इसका काम हमारा कैल्शियम ऑक्साइड का होता है टू रिमूव द इम्प्योरिटीज। अब आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड आ गई, और यहाँ पर क्या है, इन दिस पर्टिकुलर और we do still have the still iron has the impurities of silicon dioxide which are not been washed out। तो अब ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। ये आपका बेसिक इन नेचर है, ये आपका एसिडिक इन नेचर है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है और आपको मिल रहा है कैल्शियम सिलिकेट, CaSiO3, एंड जनरली वी कॉल इट स्लैग। तो स्लैग की जो डेंसिटी होती है वो कंपैरेटिवली आयरन की डेंसिटी से लो होती है, लो डेंसिटी। एंड बिकॉज ऑफ इट्स लो डेंसिटी व्हाट वी कैन सी दिस येलो पार्ट, द स्लैग इज फ्लोटिंग ओवर द मोल्टेन आयरन। जितना भी आयरन एक्सट्रैक्ट हो रहा है वो नीचे की तरफ settle हो रहा है। This is iron, right? This is iron. And over the iron, because the molten slag has a low density, so it's floating. Now from two different openings, this is one opening and this is another opening. So from two different openings, we can separate out, we can extract the molten iron or we can extract the slag. So this whole the whole process of blast furnace has basically 5 steps. These are the 5 steps. The first of all, what happens now, first of all, let's look at the raw materials which are loading from the top. यहाँ से हम ऊपर से लोड कर रहे हैं coke which is acting as a reducing agent, फिर हम ore ले रहे हैं जिसके अंदर सिलिकॉन डाइऑक्साइड की impurities है, और साथ में कैल्शियम कार्बोनेट ले रहे हैं जो कि रॉ मटेरियल है जो कि खुद डिकम्पोज होकर आपके सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करके स्लैग बनाएगा। So you should be knowing all these 5 set of reactions. The first reaction is coke reacting with oxygen forming carbon dioxide. This is exothermic. You should know it is going to help in maintaining the temperature. The second is carbon dioxide react with the coke to form actually the reducing agent which is employed in the process of extraction. Now the third reaction is iron ore reacting with carbon monoxide. It gives out now the iron and carbon dioxide. Next, that this iron ore still have got silicon dioxide impurities which are present here. Now the calcium carbonate plays its role by removing the impurities by breaking it down to calcium oxide and carbon dioxide. Calcium oxide combined with silicon dioxide to form calcium silicate, that's a slag. तो ये 5 reactions हैं जो कि एग्जामिनर आपसे पूछता है, प्रोसेस लिखो और इक्वेशन लिखो। अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज, यहाँ से आपकी ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर इंट्रोड्यूस हो रही थी और यहाँ से आपका जो है वेस्ट गैसेस निकल रही हैं। तो वेस्ट गैसेस में एग्जामिनर पूछता है कि वेस्ट गैसेस, what do you mean by waste gases, what are commonly seen, commonly found, which gas is commonly found in waste gases? तो any guesses here? वेस्ट गैसेस। नाउ यहाँ से ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर जा रहा है और एयर के अंदर आपके पास 78% नाइट्रोजन है, एंड द नाइट्रोजन बीइंग इनर्ट इज नॉट गोइंग टू रिएक्ट इन एनी फॉर्म। तो सबसे ज्यादा तो वेस्ट गैसेस में आपकी नाइट्रोजन ही होगी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर देखो कि कितनी जगह कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रही है, इस रिएक्शन में भी कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रही है, इस रिएक्शन में भी कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रही है, इस रिएक्शन में भी कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रही है। तो द अनदर गैस कैन बी योर कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड आपकी मल्टीपल लेवल्स पर यहाँ पर फॉर्म हो रही है। इसके अलावा आपके पास अपार्ट फ्रॉम दैट you have the noble gases and the other pollutant gases maybe. So this is how the process of extraction take place within the blast furnace. So we have, this is a redox reaction which we have to memorize, where iron 3 Fe2O3 combines with the reducing agent carbon monoxide forming iron and 3CO2। अब ये हम देखते हैं कि reducing agent कैसे हुआ, ये reduce कैसे हुआ Fe2O3, ठीक है, plus carbon monoxide is going to give you, this is 2, this is 3 Fe, no, this is 2 Fe प्लस 3 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें कि रिडक्शन प्रोसेस कैसे हो रहा है। अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं आयरन 3 का, ठीक है, अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं आयरन 3 का, आई एम कॉलिंग इट आयरन 3, तो ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है -2 होता है। अब ये -2 एंड दिस इज +2। अब चेंज ओवर देखो कि आयरन विल बी changing, the iron ore, iron 3+ is changing into 0. So that means this whole the iron 3 is actually during the process it is acquiring, it is gaining how many electron? It's getting 3 electron, and the gain of electron is reduction. So we can see that iron 3+
is changing into iron 0. तो यहाँ पर वो गेन कर रहा है 3 इलेक्ट्रॉन, hence we'll say that this is a reduction part. और आगे देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर, कार्बन के ऊपर +2 है और कार्बन डाइऑक्साइड पे कार्बन पे +4 है. So there is an increase in oxidation state, so that means this carbon monoxide has been oxidized to carbon dioxide. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो कि आपको ब्लास्ट फर्नेस की सीक्वेंस में याद रखने चाहिए. ठीक है. Okay, the iron which we get out of the blast furnace, the iron which we have extracted now, and we are getting it from the blast furnace, which we are getting from the blast furnace, is not, it's still not 100%. Furnace is not 100% pure. It's not 100% pure. It still has the impurities of sulfur, phosphorus, carbon, okay, silicon. So these are some impurities which are still there, right? So this the iron which we extract from the blast furnace is actually known as pig iron. Pig iron is basically the one which has all these impurities. तो अब हम क्या करते हैं, इस पिग आयरन को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, we remove it from the blast furnace, and then what we do is we blow into it ऑक्सीजन. ठीक है. ऑक्सीजन फर्नेस के अंदर एक बहुत हाई स्ट्रीम, हाई लेवल पे, हाई प्रेशर के साथ आप इस पिग आयरन के अंदर, जिसके अंदर ये इम्प्योरिटीज हैं, सही, तो ये इन इम्प्योरिटीज के अंदर आप क्या करेंगे, व्हाट आर यू गोइंग टू डू इज, you're with the pig iron with all these impurities, you're going to blow oxygen into it. जब इसके अंदर आप ऑक्सीजन ब्लो करेंगे तो जाहिर है सिलिकॉन जो है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड बन के रिमूव हो जाएगा, कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड या डाइऑक्साइड बन के रिमूव हो जाएगा, सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड की तरह रिमूव हो जाएगा, और फॉस्फोरस आपका फॉस्फोरस ऑक्साइड की तरह रिमूव हो जाएगा. सो दीज इम्प्योरिटीज व्हेन यू ब्लो oxygen through it, they can remove, right, in the form of the oxides. Now the pig iron is also known as cast iron. It contains, now these are basically your different type of iron.